Good morning vlog. Why is it so exposed? Good morning vlog. Actually, it's not morning, वैसे. It's currently 1 o'clock and I just got done shooting a video, hence the pretty face with a lot of makeup on. So today is actually a shoot day and अभी एक YouTube video मैंने already film कर दी है. I have to film one more video and I thought why don't I start a vlog. I am loving today's look first of all. Like आज का makeup मुझे बहुत ही प्यारा सा लग रहा है. Like it's very minimal, very pretty. And मैंने वही पतला सा लाइनर किया है which I showed you recently and I love it and I love these earrings. I got these from Myntra I think last year या last to last year और ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं and I just got done shooting a winter favorites video. तो मैंने यहीं पे शूट किया है actually आज. So everything is still lying around. Okay, let me quickly clean this and I'm going to give you a sneak peek of my bedroom. So as I told you, the video that I just shot is my like the winter favorites one, and there's a lot of like really cute items in that video and वो already upload हो चुकी है. So make sure you check it out. I'll link it here and the description bar. And I'm actually pre-filming a lot of content for March as well because well there might be something happening in March which I'll talk about in some future vlog actually. आज नहीं. But today let me show you like what all I've done in my bedroom so far. So this is the door to the room. I'm giving you like a mini tour. I think ये recliner वाला एरिया तो आपने पहले से देखा हुआ है. And यहाँ पे पहले bed नहीं था but bam, we have a bed now. So I've got this bed here. इस bed में bedside tables नहीं है and I like to keep it that way. And I like to keep my plants as my beds like in my bedside. यहाँ पर मैंने ये snake plant रखा है and यहाँ पे I keep this money plant but मैंने उसको अभी धूप पे रखा हुआ है. So it gets some sunlight and I'm making this like a plant room. Like literally मैंने यहाँ पे इतने सारे plants रखे हैं. There's money plant, money plant, money plant, and this money plant is like thriving so nicely. Like it looks so pretty. And यहाँ पर एक juice का glass है. I'm so sorry for that. I have some more plants here. I've got this like string of pearls कहते हैं शायद उसको. There's this plant शायद jade plant कहते हैं, not sure. And this plant जो कि मैं अपने लॉन से ऐसे randomly लाके मैंने लगा दिया. I want to like fill this entire windowsill with plants. Let's see हो पाता है या नहीं हो पाता है. But मेरा मन है कि मैं यहाँ पे सारे में plants रखूँ. Then यहाँ पे I've got this carpet here. And the theme of the room right now, like इसमें अभी theme decide नहीं किया, but it has these क्या कलर है ये. लाइक दिस इज लाइक सैमन पिंक प्लस बेज काइंड ऑफ मिक्स टाइप का कलर है. दिन में ये सनलाइट में थोड़ा सा येलोइश लगता है बट रात को लाइक जिसका ओरिजिनल कलर है इट्स लाइक दिस लाइक अ वेरी पेल सैमन पिंक कलर. एंड यहाँ पे ब्लैक काफ़ी ज़्यादा है और वाइट है. सो आई एम थिंकिंग एंड ग्रीन. सो आई एम थिंकिंग यही इसका कलर स्कीम रखूँगी मैं. नाउ बेड में तो आई हैव गॉट माई बेडिंग माई बेसिक लाइक पिलोज एंड स्टफ. बट मुझे ना ये वाला कॉर्नर बहुत पसंद है. लाइक आई लव दिस फेक प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस फेक प्लांट फ्रॉम अमेजॉन एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में दिखा रखा है. आई लव दिस. ये एक रियल स्नेक प्लांट है एंड ये जो प्लांटर है ना ब्लैक वाला ये इस गोल्ड वाले के साथ का है. सो यू कीप देम टुगेदर. बट मैंने गोल्ड यहाँ रखा और इस स्टैंड के ऊपर ये ब्लू प्लांटर रखा है विच इज़ वेरी प्रिटी एंड आई लव दिस. लाइक दिस एस्थेटिक आई लव इट सो मच. मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हैं. नाउ बाकी आई हैव गॉट माई क्लोजेट्स देयर. मैंने ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा है. लाइक वो कॉर्नर भी काफ़ी खाली है. मैं कभी कभी वो प्लांट सोचती हूँ वहाँ रखूँ या फिर कभी मैं उसको वहाँ बेड साइड पर रखती हूँ. वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे. एंड यहाँ पे लाइक डू यू सी दीज टू वॉल्स. यहाँ पे आई वॉन्ट टू लाइक पेंट समथिंग. जैसे मैंने अपने लिविंग रूम में इफ़ यू रिमेंबर वो कैनवस पेंट करके रखे हैं ना. आई वॉन्ट टू डू समथिंग सिमिलर हियर एज वेल. लाइक एक कैनवस यहाँ और एक यहाँ. लेट्स सी. एक तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत खाली खाली से लगता है. वो कॉर्नर थोड़ा खाली लगता है एंड यहाँ पे ये दीवार थोड़ी खाली लगती है. आई एम लाइक लिटरली आउट ऑफ आइडियाज इस बेडरूम के लिए. लाइक जितना कुछ मुझे समझ आ रहा था मैंने किया बट आई एम नॉट श्योर कि मैं और क्या कर सकती हूँ और क्या करूँ. सो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ कोई भी पिंटरेस्ट में ऐसे कुछ रेफरेंसेस ऑफ पिक्चर्स हैं यू कैन DM देम टू मी इंस्टाग्राम पे. ये मेरा हैंडल है तो मुझे DM कर दो. और कमेंट्स में अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ है कि मैं यहाँ पे और क्या कैसे कर सकती हूँ. एंड नाउ I have to shoot another video, like एक और YouTube video shoot करना है. and I'm thinking I'll change my makeup a little bit. अभी तो मैंने बहुत ही neutral makeup किया है, like literally so neutral you can see. But I'm thinking next video के लिए I should do something different. I think
I can add blue because I'm thinking of wearing something blue for the second video. तो मैं सोचूंगी ये वाला blue color थोड़ा सा यहाँ पे outer corner पे add कर दूँ. Let's see. Just look at the fallout of this eyeshadow. Can you see? This is इसमें ये वाली जो palette है ना, this is from Makeup Revolution. I've had this for like a couple of years now, and इसमें colors बहुत अच्छे हैं. कुछ colors तो काफी like इनका pigmentation काफी अच्छी है, but कुछ इतने chalky से हैं ना और इतने powdery हैं. Like ये blue वाला, can you see? Oh fuck, sorry. Can you see एक ही use में यहाँ पे कितना fallout हो गया. तो इसमें कुछ colors बहुत अच्छे हैं, but कुछ colors का fallout is insane. My best friends, we start to plan what we will do. Now for the lipstick, I love the combination of blue with brown. So I think I'll take my trusty favorite Maybelline Nude Nuance. I love this shade of brown with blue. Like I think blue or brown बहुत अच्छे लगते हैं साथ में. And that's it for the second look. It's blue plus brown. And now I'll change into the outfit. So since it's a sit down video, मैंने अपने pajamas change नहीं करे actually. I just changed the upper parts. I'm wearing this powder blue top, which I think by this time you all know I love it, and this white cardigan on top of it. I love these two colors together, and I'll just accessorize this outfit now. So I'm thinking इतना dark क्यों हो रहा है? So I'm thinking I'll go for something white, like maybe pearl. And with this outfit, I can go for these hoops. Pearl wale hoops can look good together. Or I can go for these earrings if I want to dress this up more. Nah. Or these ones can. नहीं, ये बहुत ज़्यादा fancy लग रहा है with this casual vibe. What about these? This can work. I like these earrings and these hoops. Which do you guys like? Like अगर आपको choose करना होता तो आप इन दोनों में से कौन सा choose करते with this outfit? Tell me in the comments. That's it. This is the outfit, and I think जो वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ ना, ये इस vlog के बाद आएगा. So stay tuned for this and remember this outfit, and now I'll go and shoot and see you after that. Done. Tear apart, we'll tear just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every Roman's loving 20-something woman wants? Done with the shoot. It's currently 3:55, and now I'm going to have my lunch-ish, I would say. So when I have to shoot these multiple videos ना, तो मैं दिन भर shoot करते रहती हूँ, तब मुझे lunch का time नहीं मिल पाता. So I like to have heavy breakfast, and दिन में ना मैं सिर्फ fruit salad type बना लेती हूँ अपने लिए, and मैं इसको सुबह ही pack कर देती हूँ, and then I have it after my shoot or between the work. During shooting I don't like to have anything heavy, so I've got this fruit salad. इसमें grapes हैं, there's banana. Fun fact, my favorite fruit, there's this orange, there's guava, and then some nuts. तो यहाँ पे बादाम और काजू भी है, and I'll just eat this and scroll a little bit. Not good. These guavas are bitter as fuck. So I was just cleaning up my studio and transferred all the footage and everything, edited a video for tomorrow, and now I thought I'll do my skincare routine and show you what all I've been doing during the winters. Actually, जितने भी products मैं winter time पे use कर रही थी. Now first of all, I just clean my makeup and I use a microfiber cloth. थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो रहा है, उसमें liner वगैरह के marks हैं. And I use this makeup cleanser from Garnier, the Garnier micellar water, the oil infused version. I love this क्योंकि इससे ना mascara वगैरह बहुत easily निकल जाता है. And now I'll go wash my face. In the air as you're watching people dance by sun. Midnight in Paris. Oh, what a feeling. So I
just got done washing my face. It feels pretty clean. And look at this cheek hair. I don't know what is happening. Why am I breaking out so much? मुझे cheeks में normally breakouts बहुत कम हुए अपनी life में. But I don't know what is happening in the past few weeks. मुझे बहुत breakouts हो रहे हैं. Also मैंने अभी recently vote दिया था, इसलिए यहाँ पे ink लगी हुई है. And it's looking a little weird. Now I told you about this Calendula wala toner and moisturizer that I got recently, and just look, I have used more than 50% of the products and I'm loving this. Winters में since skin इतनी dry हो जाती है ना, but ये पहली बार हुआ है कि मेरी skin मुझे इस बार ज़्यादा like ऐसे flaky सी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा dry नहीं हुई, so I love that. And जो भी remaining products होते हैं मैं हमेशा उनको अपने hands में apply कर लेती हूँ. So after the toner, I go for this emulsion, and ये बहुत light moisturizer होता है. So it's my first layer. Also I take the same product and इसी को मैं under eye में भी मसाज करती हूँ. तो मैं आजकल इसी को under eye cream की तरह भी use कर रही हूँ. Like earlier I used to use a separate eye cream, but मुझे इससे भी same ही results लग रहे हैं. Now the second moisturizer that I'll be using is from the Minimalist. If you remember, मैं recently आपको एक Minimalist का 3 प्रोडक्ट कॉम्बो पैक दिखाया था that I got from Nykaa. तो उसमें से ये जो ओट वाला मॉइस्चराइजर है, I have started using it and मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है एक्चुअली, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. लाइक लेयरिंग के लिए ना, इसके बाद ऐसे इमल्शन के बाद ये मॉइस्चराइजर लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड इट्स नॉट लाइक वेरी हैवी, बहुत लाइट मॉइस्चराइजर है. तो मुझे लग रहा है कि लाइक समर्स के टाइम पे भी एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट ये काफ़ी सही रहेगा. फाइनल प्रोडक्ट that I use is a facial oil. मैंने पूरे winters ये facial oil यूज़ किया and this has been my savior. So this is from Nykaa. This is the Skin Potion Superfood facial oil. उसकी जो facial oil की range है ना, वो काफ़ी बड़ी है Nykaa में. एक्चुअली काफ़ी सारे हैं. मुझे superfood वाले की reviews अच्छे लगे, so I got it. I just take like 3-4 drops of this and I just warm it a little in my palms and then pat it. And finally, I take my facial roller and my gua sha and do a few facial massages. I'm trying कि मैं ये हर दिन करूँ because facial massages are amazing for skin. सुबह तो मैं करती हूँ deep up करने के लिए, and sometimes I do them during the night as well. So I just take the roller and I just massage my skin at the upwards motion में, and then after you massage ये वाला area, you have to drain all the fluid out. तो फिर you have to drain it like this, and then neck में ऊपर को करना होता है. इस साइड पर आजकल I'm avoiding क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को दर्द हो जा रहा है because these are painful pimples. So I'm just doing it near the jawline. And then I bring it down. And then obviously I go in my forehead as well and under my eye. Under eye you have to be really careful. Don't just like tug your skin too much. And finally, the most important product, which is a lip balm. I cannot live without lip balm. I'm using this Blue Heaven ka lip balm. It's really cute and it smells amazing. And the skincare is done. Look at that glow. Now life's back in color and everything's feeling brand new. Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants.